All right, welcome back. You're watching NewsX. So let's hit the ground running in Ayodhya to get a flavor of what's happening on the ground. Akshat, my colleague, is standing by and Akshat has got people with him. Akshat, it's a pretty much countdown on. What's the buzz on the ground? What are people saying? Show us around. Well, yes, less than 24 hours left for the grand inauguration of the Ram temple in Ayodhya and of course for the Pran Pratistha ceremony. Just to give you a sense as to, what Ayodhya looks here on your screen, you can see, how it's bustling right now at this point of time because scores of people have come here, and of course, the security measures have also been kept in place, keeping in mind that there is going to be a lot of VVIP movement tomorrow because around 7,000 guests are expected to attend the Pran Pratistha ceremony. Of course, we come to you from the Lata Mangeshkar Chowk, very iconic, and it has recently become the hotspot also for the people, well, a selfie hotspot perhaps, because, barely anyone who passes through this intersection of Ram and Dharmapath can actually go, without noticing this beautiful Lata Mangeshkar Chowk, and whole Ayodhya has been adorned with flowers. We'll also try to speak to some people out here as to what they feel about the grand inauguration. So, sir, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, जम्मू से आए हैं और अयोध्या धाम राम जी के दर्शन के लिए आए हैं, मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर तो हज़ारों की भीड़ नज़र आ रही है, हर तरफ राम भक्ति नज़र आ रहे हैं और पूरा राममय माहौल हुआ पड़ा है। यही माहौल पूरे भारत में हुआ पड़ा है, राममय। आप खुद देख सकते हैं, जिस तरह मर्जी देख लो, आपको भगवे झंडे और राममय माहौल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भंडारे की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे पूरी सुविधा के साथ चल रही है। राम जी की दया से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे इतना भीड़ भड़के के बावजूद भी दुनिया आई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब दर्शन कर रहे हैं और आप खुद देख सकते हैं, पूरा ऐसे लग रहा है जैसे राम युग आ चुका है। Of course, you heard because they are all very enthusiastic about the mega inauguration. Sir, आप कहाँ से आए हैं? हम काशी से आए हैं। काशी, अयोध्या, इन सब को देखते हैं तो कैसा लगता है? क्योंकि काफी अद्भुत आनंद जिसको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, शब्दों से परे है। जो अभी जो उत्साह, जो एक आनंद, जो एक अनुभूति, जो एक फीलिंग हो रहा है अंदर में, वो शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता है। एक जो अपनी डिग्निटी है, जो हमारी सनातन सिविलाइजेशन का जो एक उदयमान हुआ है 21वीं सदी में, और भारत विश्व गुरु जो बनने जा रहा है आने वाले समय में, तो उसको देखते हुए, तमाम चीज को देखते हुए जो एक उत्साह, एक उमंग, जो एक आभा मंडल हमारे हृदय में, हम सभी के जो एक जो मतलब खुशी का माहौल, एक जो अद्भुत आनंद जो को अनुभूति हो रही है, जो हम आपको शब्दों से नहीं बता सकते हैं। तो राम जो है जो कि भारतीय सिविलाइजेशन के आइडियल हैं, आइकॉनिकल हैं, उनका जो है सो कि टेम्पल को तामीर किया जा रहा है इस मुकद्दस धरती से, जो होली लैंड से। तो यहाँ जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये भी एक अवतरित ही पुरुष उनको माना जाएगा, योगी महाराज को भी अवतरित पुरुष माना जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा काम जो है सो कि 370 भी अभी जम्मू कश्मीर से एक आपको आए, 370 को भी जो है सो कि एक्सटर्मिनेट कर दिया गया और राम मंदिर को जो है सो कि तामीर यहाँ हुआ। इस जो कि अद्भुत एक दोनों चीज हम लोग कभी सोच नहीं रहे थे कि ये होगा, लेकिन देखिए परमात्मा का कृपा, देखिए ईश्वर का कृपा जो है सो कि ये चीज हो गया। मोदी हो गया। और दो शब्द और कि राम के बारे में, अवध के बारे में भी थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर गोस्वामी तुलसीदास जी अवध को, राम को, कि अवध पुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। 14 वर्ष वनवास काट के प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो बता रहे कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी, यानी कि प्रोस्पेरिटी जो है कि तमाम, तो आज भी देखिए कि प्रोस्पेरिटी जो है सो कि तमाम समृद्धि जो है सो कि आ रहा। बात करेंगे। So of course, you heard some people out here. As I said, they are quite buoyant that tomorrow the Pran Pratistha ceremony is going to take place. We'll just pan around our camera and give you a glimpse as to how is actually bustling with people, and not only people, there you can see also which have actually painted the whole holy city Ayodhya into a divine color. And there, of course, around the Lata Chowk, you can see that 40 feet veena, which adds to its charm. And those
stone Okay, Akshay, pillars stay with also me. I'm going to come back to you. Okay. Just tell your camera person that as you're moving around, your live view connection is getting lost. It should not be a problem, but it is happening. So get that sorted out, please, since we have to come back to you immediately. We have Mahamandeleshwar Sailendra Anand Giri Maharaj joining us on the broadcast. Dr. H.S. Rawat is also joining us on the broadcast as we speak. Sailendra Anand Giri Maharaj ji, aapka ab, as we are heading into tomorrow, sir, कैसी एंटिसिपेशन लग रही है, आपको कैसा लग रहा है, आप कहाँ हैं और आपके अगल बगल में माहौल कैसा है? मैं जहां पर हूं अभी वो है वामदेव नगर, जो कि 4 ब्लॉक्स बनाए हैं संतों के विश्राम के लिए टेंट सिटी में। और फिलहाल में मैं पूरा सरयू में स्नान करके नौका विहार करके यहाँ पर पहुंचा हूँ। But the thing is that the whole of the streets are rejoicing. They have got so many of cultural performances there. They are dancing, they are presenting the rituals about the Ramayana. They are playing some of the parts of the stories of Ramayana and Ram. So it's really, you can say, a moment of rejoicing and with pride. Because अयोध्या को हम जब देख रहे हैं, तो अयोध्या के जो नागरिक है वो अपने घरों से बाहर निकल करके जिस तरह से हमारा स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से वो हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ में फोटो खिंचाना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, और साथ में उन्हें एक आशा लग रही है कि जो बरसों से पड़ी अयोध्या है, जिसके बारे में एक मीत है, जिसके बारे में एक कथन चलता है कि चूंकि यहाँ से माँ सीता को जाना पड़ा था, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी किसी के कहने पर, तो लक्ष्मी शायद अयोध्या से रूठ गई, किंतु अब ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है माँ सीता भी बहुत प्रसन्न है, राम जी भी प्रसन्न है, पूरा राम दरबार प्रसन्न है। और अयोध्या से महाराज हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। वैसे वहाँ पर लॉजिस्टिक्स, प्रैक्टिकल मैनेजमेंट, खाना पानी, रहना, साफ सफाई कैसे लग रही है आपको? बेहद अच्छी है। अभी मैं जिस सड़क से आ रहा था, मेरे सामने वो वेपर इम्पैक्ट वाली जो ड्रिजलिंग मशीन्स होती हैं वो चल रही थी सड़क को साफ करने के लिए, और कॉर्डन ऑफ था चूंकि, परंतु जो मैनेजमेंट इतने छोटी गलियों में किया गया वो काबिल तारीफ है। और निश्चय ही जो सजावट है, ऐसा कोई सा हमें पिलर नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई सी रेलिंग नहीं दिख रही है जिसके ऊपर पुष्पों की सज्जा ना हो, जिसके ऊपर मोर पंखी ना हो, जिसके ऊपर राम के प्रतीक चिन्ह ना हो। संपूर्ण सड़कें इस तरीके से रंगी हुई है जी। Okay, all right. Just stay with me. Let me get Dr. Rawat also in this conversation. Dr. Rawat, आप कहाँ हैं अभी? और दिल्ली से आपके साथ मैं इस समय ऋषभ जी जुड़ा हुआ हूँ। तो डॉक्टर रावत, क्या दिल्ली में क्या तैयारी चल रही है? देखिए, इस समय दिल्ली के अंदर घर के अंदर एक बड़ा उत्साह का माहौल है। हर घर के ऊपर भगवान राम के झंडे लगे हुए हैं और सबको यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, राम भक्त हैं, वो घर जाकर के सबको चावल देने के बाद में और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कल की, कि कल सुबह सभी लोग दीप प्रज्वलित करेंगे और उसी की तैयारियां हम सब लोग भी जुटे हुए हैं। पूरी मोहल्ले के, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, सब में उत्साह बेहद है और सब बस इस इंतजार में हैं कि कल जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण होगा और जय श्री राम के नारों के साथ चारों तरफ जो गूंज उठेगी पूरी की पूरी दिल्ली, उसके इंतजार में हम सब लोग हैं। आपका क्या प्लान है? आप घर पे देखेंगे या कहीं मंदिर जा रहे हैं? आपका क्या प्लान है कल के लिए? ऋषभ जी, मेरा प्लान तो ये, अभी तो मैं आप ही के साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, जो कल पूरे दिन टीवी के प्रोग्राम हैं। हाँ जी। और जैसा भी पूरी पूजा पद्धति के बारे में हम यहाँ से व्याख्यान देंगे, किस प्रकार से पूजा होगी, कौन कौन सी चीजें कब क्या बोली जाएंगी, कलश स्थापना कैसे होगी, मंत्र जाप कैसे होंगे, हवन के बाद में क्या क्या रिचुअल्स होंगे, उन सब की जानकारी हम टीवी के माध्यम से देंगे। और वैसे हम तो सुबह सुबह पूजा कर लेंगे। हाँ, और उसके बाद में जब भी समय मिलेगा, और वैसे मैं बता दूं कि मैं खुद कार सेवक रहा हूं और कार सेवक जितने भी थे उन सबको कहीं ना कहीं अपनी अपनी सोसाइटी के अंदर एक अवार्ड के द्वारा नवाजा जा रहा है। तो कल मेरे को भी एक भगवान राम की तरफ से एक अवार्ड मिलने वाला है कार सेवक के तौर पर। Okay, all right. Just stay with us, Dr. Rawat. Of course, we'll be here from early tomorrow morning showing you the live ceremony. The Pran Pratistha begins at 20 minutes past 12 o'clock and it's going to end in a couple of hours. So the function itself is not long, but of course the PM will be arriving there, other dignitaries will be arriving there. So the build-up will start early morning. We of course start our live telecast from on the ground at 7 o'clock. Of course, we're live through the course of this evening as well. Now joining us on the telecast is Swami Vigyananda. He is the founder of the World Hindu Congress. He's
studied here from IIT, but taken the spiritual route in his teachings and path ahead. Swami Vijnananda, let me ask you, sir, we've just concluded this telecast where we've been, in Cambodia, Thailand, Indonesia, Vietnam, telling about the roots of Indic civilization, about the Ramayana and the cultural and spiritual practices in these countries. How important was it for somebody, and not somebody, all of us, to put these stories together? See, Ram and Ramayana are very much integral part of the South Asian society and culture, right from Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Indonesia, even Malaysia also, Singapore. And in some of the, especially Thailand, Cambodia, many countries, Ramayana is very much part of the curriculum, The school children are learning regularly, they visit the temple, they do drawing, they take participate in the Ram Leela type of thing, especially in the Ramayana, Thailand it is called Ramkian, and across the Southeast Asia, especially in the Thailand, the present ruling dynasty is called Chakri dynasty. Chakri means Chakravarti dynasty, and all the king call themselves as Rama, Once they are coronated, they are called Rama. Rama 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Presently, King is a Rama 10, And previously, the very revered king was Rama 9. You see, go in Thailand, many places you have a rich, all the major roads names and bridges names are the Rama bridge, Rama 4, Rama 5 roads, You have a capital city, cultural capital city name, Ayodhya in Thailand. So entire Southeast Asia, this Ram Janmabhoomi, Murti Pran Pratistha is very sacred and very important, People are there relating and they are celebrating in a very big way. Even not only Hindu, even for the local indigenous people, many places they are Buddhist, some places even they are Muslim also. And they are participating. For them, it is a very historic moment. All right. Just for the sake of our viewers, sir, can you help us understand what is the World Hindu Congress, sir? These are the core 5 areas we need to influence. Not only influence, first we need to have a very strong, robust presence in the area. And then only we need to influence all these areas. And who will influence this? You need to train your future generation, that is youth, 50% of population which is talented, qualified, knowledgeable women, and the general Hindu society and Hindu organization. So World Hindu Congress is a platform where all these areas is addressed, and each organization is independent, functioning their own. Just like World Hindu Economic Forum focus on the economy, Hindu Education Board focus on the education, in World Association Hindu Academician focus on the academy, Hindu Media Forum focus on the media. Media is not just only news media, we focus on news media, means print media, electronic media, social media, digital media, and technology of media, commerce media, entertainment media, these are the media. Then we focus on the politics. Politics is a very important in the present society discourses. How we are going to influence, the politics decide. So we need to focus on the politics and decision-making process in the government and the bureaucracy. That area is focused on the World Hindu Democratic Forum. Hindu Students Youth Network focus on the across the world campuses on among the Hindu youth and students. Hindu Men Forum focus on the positioning women in the strategic area of influence. And same with the Hindu organization, Temple Association Forum, Every Hindu organization should participate in the area of expertise. So all these organizations keep working regularly, continuously on their own area of influence and sphere. And once in a 4 year, they come together and become a global platform. That is World Hindu Congress. So the first World Hindu Congress happened in 2014 in Delhi. That was the 125th anniversary of the Param Pujaniya Dr. Kesav Baliram Bhedgewar, the founder of the RSS, and the 50th year of the Vishnu Hindu Parishad. And the second World Hindu Congress happened in the 2018. That was the occasion 125th anniversary of the Swami Vivekananda famous Chicago lecture, the Parliament of World Religion. All right. So let me take you just quickly back to our themology, because we were discussing, sir, Indonesia is a Muslim majority country, right? Yet they celebrate the Ramayana. They have the Garuda in their national emblem. What does that teach us, sir?
No, no. See, the important part in Indonesia, see, half of the Indonesia became Muslim very late. So the radicalization, Islamization process was very slow, and half of the Indonesia became Muslim long ago. So that part is very radicalized. So especially the Java Island, So Java Island has a lot of influence, Hindu influence. Majapahit was once very powerful kingdom in Indonesia. So the Hindu influence in Indonesia is very strong. Slowly they became Muslim, but the process of radicalization was very late. Therefore, the culture is there, language is there, practices is there, so it is ingrained there. Society cannot create from somewhere in the sky, Otherwise, they will have the same problem like how the Turkey are facing and Malaysia is facing, and then especially the Pakistan and Bangladesh are facing, So Indonesians have their pride in their ancient cultures, some language and practices. So they have adopted Garuda as their emblem, national emblem. Also, Garuda is their airlines. You can see in the Jakarta, the main square, they have Bhagwan Krishna on the chariot teaching, giving updates to the Arjuna and Bhagavad Gita. All those symbols is there. So this is lesson to the Indian Muslim, especially who seek their attachment to the Arab and West Asian Muslim, and they think their center is somewhere else. So this is a lesson for them. They can learn from Indonesia. Okay, all right. It's a viewpoint. So let me take the viewpoint on Thailand now. That's a Buddhist, I think 95% Buddhist country. Okay, they also have the Garuda as the national emblem. Their head of state is called King Rama the 10th. What is the context there that we can take away? Thailand, see, the dynasty, they call themselves Chakra dynasty. Chakra dynasty means the Chakravarti dynasty, And all the kings are called Rama. Once they are coronated, they are called Rama. Rama 1, Rama 2, Rama 3, Rama 4, Rama 5, Rama 6, 7, 8, 9, 10, Present king is Rama 10. This is how they are called, King Rama 10, Previous king, the famous, very revered king was called Rama 9. So there is no issue in that, They by practice, they are Buddhist, but Buddhist is not very separate and heterogeneous to the Hindu, So many things is very common. Our foundational system is the same. And so they practice, they have no issue, And even you see in Thailand, you see all the major road in the Bangkok is called Rama 1, 2 name, Rama 9, Rama 4, Rama 5. The main bridges are called Rama. Even they have a capital city of Rama. So they have integrated very, very well. And they respect that also, Very much respect that. Okay. Yes. And for your information, Bhagwan Buddha is also born in the same family of Bhagwan Ram, Bhagwan Ram is born in the Ichwaku Kul. Even Bhagwan Jain, Bhagwan Rishabdev, Adinath, Bhagwan Jain, Rishabdev. And Bhagwan Mahabir is also from the same family of Ichwaku family. Bhagwan Buddha is also from the same family. Guru Nanak Dev and Guru Gobind Singh are also from the same family. So you can say Bhagwan Rishabdev, Bhagwan Mahabir, Bhagwan Ram, Bhagwan Buddha, Guru Nanak, Guru Gobind Singh share the same distinguished lineage of Ichwaku Kul. Okay, all right. Swami Vigyanand, thank you very much for just putting your viewpoint across on the larger themology of what we were discussing. Appreciate your time and the thoughts that you've shared from your perspective. Okay, let me quickly head back onto the ground in Ayodhya. You're seeing the latest visuals on your screens. Akshat is still with us. Akshat, okay, now take us through what the plan of action is from tomorrow. We have a detailed itinerary. What's going to be taking place? Well, yes, we are currently near Lata Chowk, as we said earlier, and heavy security deployment is here. If we can just show you the visuals right there. So you can see RAF, Rapid Action Force, is there on the ground. Then UP, some personnel of UPATS is also there on the ground. What we are learning is that around 13,000 personnel from forces will be keeping a continuous vigil because there will be a lot of VVIP movement. Around 7,000 guests are expected tomorrow.
for the Pran Pratistha ceremony. Of course, Prime Minister will be landing at around 10:30 a.m. At Ayodhya Airport, and from there on, he will be, on exploration of Ram Janmabhoomi premises from 11 a.m. to 12 noon. And post that, he will be conducting the Pran Pratistha ceremony. This is, what his schedule says. Also be, having a public meeting around 1:30 p.m. And then at around 2 p.m. he will be visiting the... Okay, just stay with me, Akshit. Like I said, we are losing your connection. I'm told that is because there is a VIP movement happening there on the ground. Rajiv, I'm told, is joining us on the broadcast. Rajiv, what do you see around you? Where are you in Ayodhya? आप कहाँ हैं और वहाँ पर अभी क्या प्लानिंग हो रही है? Rishabh, first of all, Jai Shri Ram. I am at present at Kar Sevak Puram, Rishabh. And Rishabh, Ayodhya is marvelous. Ayodhya is majestic and Ayodhya is at par. Things are on ground and agencies are there. Cleanliness is going on 24/7. Everything is okay. But let me show you the visuals here at Kar Sevak Puram, and you will be surprised to see the activity over here in Kar Sevak Puram, Rishabh. Let me show you first this EV. You can see, you can have a glimpse of this EV. This is for saints, and probably what we were told that there are 6 EVs like this, and these EVs are supposed to be used at Ram Janmabhoomi Parisar from tomorrow onwards. And if I can guess, you can see Prime Minister Narendra Modi also using this EV. This is of Bhagwa color, and so many, you see, Rishabh, earlier when you... Yeah, Rajiv. Can you still hear us, Rajiv? Okay, like I said, there's VIP movement that is happening there, so we can come back. He's there where the Kar Sevaks are staying, if I'm not mistaken. One of our guests has also been exactly at that place, having stayed there. महाराज, आप ही वहीं पर हैं कार सेवकपुरम में, जहाँ पर हमारे रिपोर्टर राजीव बाहर खड़े हुए हैं? और वामदेव नगर में है, जो कि हमारा टेंट सिटी बनाया हुआ है साधु संतों के लिए। ये हमारा तीर्थ क्षेत्र पुरम है, इसके अंदर है। तो आप, और यहाँ पर भी, हाँ जी, हाँ, तो आप अभी आपको क्या खबर मिल रही है कि वहाँ पर अब क्या क्या हो गया? हमने अब वहाँ पर वीणा देख ली है, हमें पता है कि एक 3 टन का धूप जलाया जा रहा है, चाबियाँ आ रही हैं, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर से ईंट और मिट्टी आ रही है, पूरे देश भर की सारी रिवर से जल लाया गया है। आपको क्या देख पाए हैं आप अयोध्या में? देखिए, मैं तो जहाँ से आ रहा हूँ, उज्जैन से, यहाँ पर सैकड़ों संत इकट्ठे हुए और आज उज्जैन पे सरयू माँ के ऊपर उन्होंने चुनरी अर्पण करी। उससे थोड़ा आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद में चौराहे पे देखा तो बहुत विशाल एक अगरबत्ती जल रही थी। उसके आगे गए तो बहुत सारे स्टेजेस लगे थे, उन स्टेज के ऊपर डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स लगातार हो रहे थे। विशेष तौर पर वो लिंक कर रहे थे रामायण को, राम को। और साथ में एक जगह मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो अभी डॉक्टर विज्ञानंद जी ने बोला, स्वामी जी ने, वो थोड़ा सा मुझे झलक देखने में आई, पूर्णतः मैं उसे नहीं देख पाया, पर मुझे लग रहा था कि वो किसी तरह से थाई संस्कृति का है। क्योंकि फिलहाल जब मैं कोरिया गया था तो वहां पर भी मेरा व्याख्यान प्रमुखतः इसी विषय के ऊपर था कि सूरी रत्ना जो हमारे अयोध्या की राजकुमारी है थी, उनका विवाह साउथ कोरिया के राजकुमार के साथ हुआ था। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि साउथ कोरिया के साथ में भी हम कुछ इसके प्रमाण जुटाएं, क्योंकि few couple of years back there was a postal stamp issued on Suri Ratna also. Yes. So that may be a very nice cultural bondage between different countries. Look, when we go through Ramayana, what I feel is that the practices of politics in this Raghu Kul, that was very nice. When you are going to dethrone Bali and throning Sugriv, that was a very fantastic political idea. And we are not following any expansive theory like our neighboring country, China. Okay. We are having a very nice relationship with our... Yes. So obviously, Maharaj, we have to now take up a lot more efforts, and we are doing our bit, educational bit at least. Like I said, a little bit of refreshment of the imagination was required. But Maharaj, in the significance of the temple itself, जो ये अब राम टेम्पल बनाया जा रहा है, अब 400-500 साल बाद, 80 years of Indian independence, क्या है इसके सिंबलिज्म? क्योंकि लोग कहते हैं कि देखिए, क्या ये भारत को, विल इट ब्रिंग अस टुगेदर एज अ पीपल? जो हमारा चर्चा चलती है कि 2 नेशन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये फिर
कंट्रीब्यूट कैसे करेगा हमें आपसी लाने में? जी बिल्कुल, देखिए ये समरसता का प्रमुख सिद्धांत के तहत हुआ है, ये प्रकृति ने करवाया है। हम तो मजाक कर रहे थे, आज यहाँ पर सारे संत बैठे थे कि अयोध्या ने तो 14 साल का जब इंतजार किया होगा राम का, तो उन्हें कितनी पीड़ा हुई। किंतु आज की स्थिति में समस्त हिंदू 500 साल से ज्यादा से इंतजार कर रहा था। और आप देखेंगे कि इकबाल ने भी उन्हें क्या कहा था, हिंद के इमाम कहा था ना। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई धार्मिक वैमनस्यता नहीं आती। राम राज्य के अंदर आप देखेंगे उन्होंने किस तरह से अपनी सेना को बनाया है। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रजाति के जानवरों तक को लिया, भिन्न भिन्न जनजातियों को लिया। प्रत्येक जो आज के तारतम्य में, आज के प्रेजेंट कंडीशंस में जो हम कहते हैं कि ये वर्ण है, ये जाति है, उन सारी जातियों की प्रमुखताओं को उन्होंने एकत्रित करा और यूनिफाई करके यूनानिमस डिसीजन के साथ में, ऐसा नहीं उन्होंने किसी को फोर्स करा कि आप हमारा साथ दीजिए अन्यथा हम आपका राजपाट छीन लेंगे। जिसको जैसा समझा सकते थे वैसा समझाया। और देखिए कितना आश्चर्य का विषय है कि रावण का साथ देने के लिए ज्यादा राजा नहीं उस काल के आए, सारे जितने भी प्रमुख थे वो सब राम के साथ आते चले गए। तो अपने आप में एक प्रकार का you can say it's a time for Hindu renaissance. Okay, so हमारे हिंदुत्व का, so you mentioned it. Now as you know, Smriti Irani was just in Medina because there are a record number of Muslims going for the Hajj. I myself have been to the Vatican. I've been to St. Peter's Basilica. I've seen कि वहाँ पर Michelangelo ने क्या बनाया, Da Vinci ने क्या बनाया. Beautiful statues, absolutely fabulous. So Dr. Rawat, let me bring you in, sir. Other than the issue of faith, क्यों बोला जाता है भाई राम हैं तो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों में, चाहे वो भारतीय नागरिक हों या विश्व नागरिक हों, उनके लिए अयोध्या में क्या सुकून, दिलचस्पी, स्पिरिचुअलिटी क्या मिल सकता है उनको आगे जाने में? ऋषभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान राम जब थे त्रेता में, उस समय तो सिर्फ सनातन धर्म ही था। उस समय कोई भी पंथ और कोई भी धर्म नहीं था। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण जो लिखी है और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है, उस रामायण की चौपाइयों को अगर पढ़ते हैं तो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है वो अपने अंदर चरितार्थ उनको कर सकता है। किसी भी धर्म का बच्चा अगर इस बात को फॉलो करता है कि भगवान राम ने अपने माता पिता की आज्ञा के लिए 14 साल के लिए वन में जाना स्वीकार किया, तो निश्चित तौर पर चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो अपने अंदर धारण कर सकता है। किसी भी धर्म का कोई भी राजा हो, कोई भी शासक हो, अगर भगवान राम को फॉलो करता है तो कभी अन्याय नहीं करेगा, वो सबको बराबर का देखेगा, ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, कहीं पर भी कोई अधर्म की बात नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी। जिस प्रकार से आज देखने को मिलती है हिंसा, बड़े बड़े जो बादशाह होते हैं, राजा होते हैं या डिक्टेटर होते हैं, वो हिंसा में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन भगवान राम को फॉलो करेंगे, उनके चरित्र को फॉलो करेंगे, रामायण को फॉलो करेंगे और हनुमान जी को फॉलो करेंगे, उनकी भक्ति को फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व को एक सीख मिलेगी कि हमें भगवान राम के मंदिर से, भगवान राम की रामायण को हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। तो ये कनेक्शन कैसे बनाया जाए डॉक्टर रावत? क्योंकि लाइक आई सेड, if I go to the Vatican, आप सिस्टीन चैपल जाते हैं कि जी हाँ देखो जी इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई माइकलएंजेलो से 500-600 साल पुरानी है, ठीक है। अब 500-600 साल तो हमें अब इसको राम टेम्पल बनाने में ही लग गए या फिर से बनाने में ही लग गए। सो फॉर ऑल जो आपके जूइश लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, और भी धर्म के लोग हैं, ये माहौल कैसे क्रिएट किया जाए कि सब एवरीबडी फाइंड्स देमसेल्फ वेलकम? ऋषभ जी, उसमें आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जैसे आज पूरी दुनिया को आप लोगों ने सबको दिखा दिया कि भगवान राम का टेम्पल बन रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। पूरा वर्ल्ड जानने को उत्सुक है कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, ये वेद मंत्र होते क्या हैं, किस प्रकार से रिचुअल्स होते हैं। आप लोगों ने इसको दिखाया है। और भविष्य में जब आप लोग ही शास्त्रार्थ करने के लिए सबको बुलाएंगे, वो वेटिकन वालों को भी बुलाएंगे, आप मक्का मदीना वालों को भी बुलाएंगे, आप यहूदियों को भी बुलाएंगे कि भाई शास्त्रार्थ करिए। और बैठ करके जैसे पहले शास्त्रार्थ होता था, आप ही के टीवी चैनल पर आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार जब सामने बैठेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी निश्चित तौर पर होगा। और हम उन सबके तथ्य रखेंगे कि सनातन धर्म अनादि काल से है और इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ये सब चीजें आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करती है। अभी तो राजा तो इस तरह का कोई दरबार लगा नहीं सकते, लेकिन टीवी चैनलों पर जरूर इस प्रकार का दरबार लगता है और बहसें होती हैं, तर्क वितर्क के साथ इन चीजों को रखा जा सकता है। हमारे सामने महामंडलेश्वर
जी बैठे हुए हैं पूज्य। जब हमारे इस तरह के विद्वान लोग बाहर निकलेंगे, जाएंगे साउथ कोरिया में जाकर के बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म का और भगवान राम के मंदिर का प्रसार अवश्य होगा पूरे विश्व के अंदर। Okay, all right. Just stay with me. I just want to touch base once again with both Akshit and Rajiv who standing by in Ayodhya. Rajiv, sorry, आपका कनेक्शन थोड़ा टूट गया था. अगर आपको आवाज आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए. मुझे आवाज आ रही है आपकी. आई एम गेटिंग योर वॉइस वेरी क्लियरली, बट द फैक्ट इज ऋषभ, अयोध्या इज कंप्लीटली चेंज. वट एवर आई वॉज एक्सप्लेनिंग अ लिटिल बिट अर्लियर, आई एम एट कार सेवकपुरम एट प्रेजेंट, एंड you see a few days back when you asked to differentiate, give difference between past Ayodhya and present Ayodhya. During past Ayodhya, 90% time you get to find a Ayodhya Vasi here, but nowadays what happens? You go and ask, he must be from some other state, some other place. Let's go and have some chat with a few guys. आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पुणे से आए साहब. महाराष्ट्र से आए हैं. ऋषभ, you see, ये महाराष्ट्र से हैं. कब चले आप पुणे से? पुणे से हम 16 तारीख को पुणे यहाँ पर आए अयोध्या में, और अभी पुनः प्रतिष्ठान होकर भी हम 28 तारीख तक यहाँ सेवा करने के लिए रुके हैं. अपने घर की याद नहीं आ रही आपको? घर की याद तो फिलहाल तो नहीं आ रही है. प्रभु रामचंद्र की सेवा में हम मग्न हो गए हैं. तो कितने लोग आए हैं? 50 लोग आ गए टोटल. इसमें से 50 लोग का ग्रुप है हमारा, और यहाँ पे हम सब सेवा के लिए आए हैं. और उसमें महिलाएं कितनी? महिलाएं 12 है. 12 महिलाएं. हाँ. आपको परिवार वाले बुलाते नहीं कि इतनी दूर आ गए, यूपी में बहुत ठंड है, महाराष्ट्र में ठंड नहीं होती? परिवार वाले तो फोन करते हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो देख के परिवार वाले भी खुश हो रहे हैं. वो लोग बोल रहे हैं आप लोग बहुत लकी हो, आप वहाँ जाके आपको सब ये सेवा करने का मौका मिल रहा है, देखने का मौका मिल रहा है. और घर वालों की तो बिल्कुल याद नहीं आ रही है हमको, क्योंकि हम इतने मग्न हो गए सेवा में. यहाँ पे रामचंद्र जी की सेवा में मग्न है हम लोग यहाँ पे. बाला साहब के टाइम से जो महाराष्ट्र में भगवान राम को लेकर मूवमेंट की बात थी, आज मंदिर बन रहा है, आपको दिल में क्या आ रही है बात? अरे ये तो बाला साहब जी की इच्छा पूरी हो रही है. जो उन्होंने उस टाइम में कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये बाबर मस्जिद कितने तोड़ी है, मेरे शिव सैनिक ने तोड़ी है. तो ये महाराष्ट्र के लिए तो गर्व की बात है कि आज वो उनका सपना पूरा हो रहा है, और हम महाराष्ट्र लोग के तो उससे भी गर्व की बात है. और आज जो रामलला की जो स्थापना हो रही है, और उनके वो अभी पुनः से अपनी सनातन धर्म की शुरुआत हो रही है, और राम राज्य की शुरुआत अभी चालू हो जाएगी. और सब जगह देखने जाओ तो आज अयोध्या तो पूरी नगरी सजी हुई है. और हम तो, हमारा सौभाग्य है कि हम पुणे से हम यहाँ पे आ सके और हम सेवा दे सक रहे हैं. हम ऐसे हम हर जगह जाते हैं, तिरुपति बालाजी में भी सेवा करने जाते हैं. अच्छा, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण मिला है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुतों को निमंत्रण नहीं मिला, या मिला भी है तो उन्होंने मना कर दिया है. ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जिसको मिला है वो नहीं आ रहे, वो अभागे हैं, और जो मिला है, जो नहीं मिला है तो भी वो आ रहे, वो भाग्यवान है इसमें, जो कि इसका एक साक्षी बन रहे कि आज 500 वर्ष बाद जो पुरातन अपने राम लला यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्थापना हो रही है. उसमें ये लोग सब गवाही हो जाएंगे, एक साक्ष्य हो जाएंगे. इसमें हमारे महाराष्ट्र के 50 लोग भी इसमें साक्ष्य रहेंगे, जो कि हम भी वो भाग्यवान है कि जो आज हमको ये मिलेला है. अयोध्या कितना चेंज. आप किधर से हैं आप लोग? राजस्थान से. लीजिए ऋषभ, what I told you just a bit earlier, he is from Rajasthan. I couldn't find a person from Ayodhya. They are here, they may be here, but Rajasthan का outnumbered for today. राणा प्रताप की भूमि से, भक्ति और शक्ति की भूमि. हम अभी एक भगवान रघुनाथ जी की तस्वीर लेके आए. अभी यहाँ भरत कुंड में हमने भेंट की है. 400 वर्ष पुराना हमारे डूंगरपुर नरेश ने एक भव्य प्रतिमा बनाई थी भगवान राम की, जो यहाँ वो प्रतिमा यहाँ आने वाली थी. अभी हमने भरत कुंड में श्रीमान भाई साहब को भी भेंट करके हम आए. तो कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ? ना कोई दिक्कत नहीं. यहाँ जो व्यवस्था है वो जो क्या दिक्कत, राम राज्य में कोई दिक्कत होती है क्या? वर्षों से इंतजार हो रहा है. सनातनी समाज आज 500-700 वर्षों से इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो आज राम राज्य हो रहा है. अयोध्या में देखिए आप, पूरी फूल मालाओं से सजा हुआ है, इतना भव्य सुगंधित हो रहा है. लोग राम राज्य में खुश है. साधु संत पूरे देश से, भारत के प्रत्येक हिस्से से हम सेवा करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर. जो साधु संत है, इनकी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है. इससे बड़ा क्या? राजीव, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार और सबको. राजीव, क्विकली बिफोर गोइंग अहेड, कैन यू जस्ट टेल अस कि आज शाम को क्या प्लानिंग है? आई एम टोल्ड कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, लेकिन आज शाम को क्या प्लानिंग है और कल सुबह का शेड्यूल क्या है?
आज शाम को शय्या अधिवास होगा. Basically, there are 12 adhivas. In fact, in a normal situation, there are 7 adhivas for a Murti Pran Pratistha. But as far as Ram Lala's Pran Pratistha is concerned, there are 12 adhivas, and 12th and final Shayya adhivas will be there today evening in the evening. And Deputy CM Keshav Prasad Maurya was earlier here, and CM Yogi Adityanath is also here to look after the preparations. But let me show you one thing. If Rishabh, you have some time, I can show you. They were talking about flowers all over. Flowers all over. This Kar Sevak Puram is, decorated with flowers, and there are so many things here as a gift for Ram Lala. Let me show you this lock. This is the biggest ever lock of the world. This lock is almost 8 feet high, 400 kg lock, 30 kg is the weight of keys. You can see this lock is from Aligarh. So everybody is trying to register himself or herself as if he is doing something exceptional. Rishabh. Okay, Rajiv, thank you very much for joining us. Let me hop across to Akshit, who's at the Lata Mangeshkar Chowk. Akshit, what is the schedule for tomorrow morning? Well, yes, Rishabh, just to discuss in brief, in the evening today, Vyati home will take place in which, sacred offerings will be made to the fire. And tomorrow morning, as I said earlier also, at 10:30 p.m., Prime Minister Narendra Modi is expected to land at Ayodhya Airport. And post that, he will be, exploring the Ram Janmabhoomi premises. And, alongside, I will just continue to show you the visuals also, just to give you a sense as to how Ayodhya has gone under total overall. And yes, as I was saying, at 12 noon, Prime Minister will be conducting the Pran Pratistha ceremony as he is the, Mukhya Yajman, which they say as the main host of the Pran Pratistha ceremony. And it will approximately take, it will be finished till 1 p.m. And after that, Prime Minister will take part in a public meeting in Ayodhya itself, and then he will go on to offer prayers at the Shiva temple, and then he will depart from Ayodhya. So approximately, Prime Minister is going to stay in Ayodhya for 5 hours, and then he will depart from Ayodhya. So that's what is scheduled. So Akshit, what is the status right now in terms of access to the city? Is access closed only to those with special passes, or can anybody come and go? Well, yes, you are right. The movement has been restricted because on the ground also right now you can see a lot of security personnel who are keeping a continuous vigil, and those who have the invite or the entry passes can only enter the city. And very importantly, Rishabh, those who have the invites also have to carry a special QR code designed by the Ram Janmabhoomi Trust only, and then only they will be allowed access inside the premises. So, as we were saying, a 3-layered security has been put in place to ensure that no infiltration or no untoward incident take place, because around 13,000 personnel from different forces are on the ground to guard the holy city Ayodhya. Okay, all right. And so now the temple itself is, I'm being told, the security restrictions will be lifted at about 3 or 4 p.m. tomorrow. So will media get access? Will some certain individuals get access after the VIP ceremony with the Pran Pratistha is over tomorrow? Well, what we are picking up is that that access for, all the people who want to offer prayers at the Ram temple will be open from 23rd of January, which is the day after the Pran Pratistha ceremony, because there will be a VVIP movement after the ceremony gets over also. Around 7,000 to 8,000 guests are expected to attend the Pran Pratistha ceremony. So for that very reason only, everything has been kept in mind to ensure the security and safety of the VIPs who are coming to attend the ceremony. Okay, and the temple, of course, itself opening on the 26th, is it, for public? Well, as of now, what we have learnt is that it will open on 23rd only, and the timings of darshan is from 7 a.m. to 10 a.m. in the morning. Okay, so what is the process? Do you have to register for darshan? Can you just show up? For anybody who now wants to visit Ayodhya, what's the process that we are aware of to get in line for darshan?
Well, to offer prayers to the Ram temple, we have to, register for online darshan. That's what we are being told. As Ram Janmabhoomi Trust officials have also told that just register for the online darshan, and then only the further process, will be done. But as of now, restrictions are definitely in place, okay. Yeah. All right. Okay. Akshat, we'll touch base with you once again in the evening to get us the latest updates of what's happening on the ground. So, ladies and gentlemen, yes, the mahal is good. The security is tight. Access is restricted. And people are, of course, being advised to celebrate this in situ. So, celebrate where you are and where you mark it. And that's a choice. Let me just quickly touch base with Dr. Rawat. Now, for people who are watching this broadcast, this is not the only ceremony. This is the Pran Pratistha. Then, of course, when there will be a completion ceremony and the work on the site will go down. What do you expect over the next few weeks and months? How many people do you think are going to be visiting Ayodhya, sir? ऋषभ जी, कल से एक क्रांति की शुरुआत होने वाली है और अयोध्या वर्ल्ड का मक्का मदीना और वेटिकन के बाद सबसे बड़ा एक धार्मिक यहाँ पर प्लेस बनने वाला है। यहाँ से पूरे वर्ल्ड के लिए एक धार्मिक क्रांति की सूत्रपात हो जाएगी कल से। यहाँ से जैसे कि हम विश्वगुरु पहले भी थे और हम कल के बाद विश्वगुरु हो जाएंगे और यहाँ पर करोड़ों लोग आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ का जो रेवेन्यू है, यहाँ की जो जीडीपी है, यहाँ का विकास है, वो बहुत बड़ा रोजगार है, ये सब बढ़ने वाला है। So it's worth thinking about it, right? I mean, even on a normal occasion, okay, at temples like Tirupati or temples like Padmanabha Swami or Lord Ayappa temple, we're talking about 3 to 6 to 7 million people a year as it is come, okay? At the Mahakumbh, anywhere 10, 20, 30, 40 million people, okay? Sometimes it can be even more than that. So just imagine the number of people will be visiting. Maharaj, what is your expectation, sir? Over the next month or 2 months, what records in terms of tourism will we break? Definitely, India will be on the topmost of the tourism index. Because what I feel is that when you are developing in a such nice manner, and the connectivity also you are getting it done, the airports are being met, the roads are being constructed at a vast level. So definitely people will be feeling it very easy to do the darshan, to visit the places. So tourism will be at its peak. It will break all the records of the past. परंतु एक चीज मैं बार-बार जो कहता हूँ वो यही कहता हूँ कि we need to be, look, the intention of the government is very clear and it is very pious also. But what I feel is that the execution should be also with full honesty. Otherwise, the connectivity will make the city suffer. Rather than at the initial level, the city suffers also in having such a... you're right. Abhi airport, thoda to ho gaya, but usko properly upgrade karna hai. It should be made to a proper airport. I believe 203 electric buses have now been put on the streets of Ayodhya in just the past 24 hours. So that's a major transportation upgrade. But getting to and from, your guest houses, your accommodations, your hotels, it's going to be a process. And it's just not about government. Of course, it has to be everybody involved. And people who are residents of Ayodhya will greatly benefit from the number of people. It might be a nuisance for some in the terms of the crowding, and I can understand heavy security, especially for the next 24 hours. But security will become easier after tomorrow and be something special. Thank you to both Dr. Rawat and Maharaji and to my reporters. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.